एनलार्जमेंट हो सकती है। आगे enlargement के लिए भी there has to be a specific, ये जो language used है, specific authorization, a very specific authorization. Supplemental powers. And the conferring thereon of supplemental powers ये है कि आप फाइनेंस supplemental powers ये है कि आपको वो कह सकता है कि आप फाइनेंस से ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या आप ये लिटिगेंट को कोई अपील आई है तो उसमें ये टिकट लगा के पैसा अकेले फैसला नहीं करेंगे, हम नहीं मानते इस बात को। पावर दे रहे हैं कि 4 और लोग नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो रेगुलेट कर रहे पावर ऑफ रिलेटिंग टू जुरिसडिक्शन एंड पावर्स। 2 पीस में पढ़े ना आप प्लीज, देखिए इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसका ये वाला इंटरप्रिटेशन है इसका, एज सच एक्सटेंट as is expressly authorized by or under the constitution the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court। ये एंड के बाद जो है ना वो conferring thereon of supplemental power। अगर इसको 191 के साथ आप मिला के पढ़ते हैं subject to constitution and law, तो ये वाली जो बात 2 हिस्सों में है, इसको आप सप्लीमेंटल पावर को आप थोड़ी देर के लिए अलग भी कर दें तो वो एंड है, वो और नहीं है। ये कह ये रहा है, ये आर्टिकल 191, अगर आप आर्टिकल 191 को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों पर इस वक्त समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। तारीख में पहली मर्तबा फुल कोर्ट की समाअत पीटीवी न्यूज और पीटीवी नेशनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है। निकला वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का 5 रोज़ा दौरा अमरीका। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। निकला वजीर आजम दौरे में बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुलाकातें और अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का दौरा भी करेंगे। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। ₹1.27 मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $295.53 पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 110 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 45,866 पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का चोरों और जारी। ₹1.27 जारी सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $295.53 पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त बिजली चोरों 100 इंडेक्स में 110 से ज्यादा चोरी और सहूलतकारी में मुलव्वस दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 45,866 पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का चोरों और जारी। जारी सवाल में डॉलर $295.53 पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बिजली चोरों 100 इंडेक्स में 110 से ज्यादा चोरी और सहूलतकारी में मुलव्वस जारी। तर्जुमान ANF। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में हुकूमत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। निगरां हुकूमत के इक़दाम साबिका हुकूमतों से बेहतर और कारकर्दगी काबिल सताइश है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन निगरां हुकूमत आर्मी चीफ की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। इनके इक़दाम लायक तहसीन है। जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन पर अवामी रद्द-ए-अमल। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका काविशें। अवाम का निगरां हुकूमत और पाक फौज की कार्रवाइयों का खैर मकदम। चीनी की स्मगलिंग और डॉलर माफिया के खिलाफ किए गए इक़दाम से उनकी कीमतों में वाज़ेह कमी हुई। ऐसी कार्रवाइयां जारी रहनी चाहिए। मोदी सरकार की मुल्की बदनज़मी पर से आलमी तवज्जो हटाने की भूंडी कोशिशें जारी। इंतखाबात से कबल सियासी मफाद के लिए मनगढ़ंत ऑपरेशन की झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक थिएटर ड्रामा, मकसद पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर मकबूजा कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाना है। भारत सियासी मकासद के लिए पुलवामा ड्रामा रचाना चाहता है, जिसके वाज़ेह सबूत मौजूद है। कंट्रोल लाइन के साथ भारतीय दरअंदाजी का प्रोपेगेंडा। चकोठी सेक्टर से मुत्तसिल इलाकों के अवाम की शदीद मजम्मत। कंट्रोल लाइन पर मुकम्मल तौर पर अमन है। भारत ने खामखा शोर मचाया हुआ है।
हम किसी भी मुश्किल घड़ी की सूरत में पाक फौज के शाना बशाना है। भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद महज सियासी मफादात को हासिल करना है। कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी तूल पकड़ गई। जस्टिन Young's Mayonnaise. Mayo expert Young's. Pakistan's #1 mayonnaise brand. सिखों के मुजाहरों से निपटने के लिए कनाडा पर तनकीद। कनाडा में हर शहरी को पुरअमन एहतजाज और आजादी राय का हक हासिल है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो। चीनी वजीर खारजा वांग शी और अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती जैक सलवान के दरमियान माल्टा में अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी, यूक्रेन तनाज़ा और आबनाए ताइवान समेत दीगर अहम मसाइल पर गुफ्तगू। मुश्तरका ताल्लुकात और जहाजरानी समेत एशिया पैसिफिक के मामलात पर बाहमी मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तेफाक। अमरीकी साइकिल सवार सेपेक्स ने साइकिलिंग ग्रैंड टूर वोल्टा आस्पाना अपने नाम कर लिया। टूर में साइकिलिस्ट ने 21 मराहिल में मजमूई तौर पर 3153.8 किलोमीटर का फासला तय किया। सेपेक्स ने 76 घंटे 48 मिनट और 21 सेकंड्स के वक्त के साथ पहली पोजीशन हासिल की। रेस का 100 किलोमीटर का आखिरी मरहला ऑस्ट्रेलिया के कैदन ग्रोविस के नाम रहा। और फ्रांस में रग्बी वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया को फिजी के हाथों अपसेट शिकस्त। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका ने अपने मैचेस जीत लिए। फिजी ने ऑस्ट्रेलिया को 15 के मुकाबले में 22 पॉइंट से हराकर वेलाबाइस के खिलाफ तारीख में तीसरी जबकि वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी समेटी। इंग्लैंड ने जापान को 12 के मुकाबले में 34 पॉइंट से हराया। जनूबी अफ्रीका ने रोमानिया के खिलाफ एकतरफा मुकाबले के बाद 76 पॉइंट से कामयाबी समेटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मैं हूं हुमा मलिक। अहम खबरें आप जान चुके हैं और इस वक्त आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों पर इस वक्त समाअत जारी है। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। Well, we want to change the law, they can change the law. Because they had made the law, they can change it. Likewise, if the Supreme Court has made the rules and the Supreme Court decides to change them, so be change them. That's in very That's the precise submission I'm really trying to make. With the doctrine of separation of powers and trichotomy of powers. It's as simple as that. My Lord, an event arose when my judgment was and benches were issued. And a judgment argue करिए अपना केस and आप अपना केस आर्ग्यू करिए। my case has been allow me अगर questions ना हो Lord, this is PLD 1998 Supreme Court 161 Malak Asad Ali case. PLD Malak Asad Ali versus Federation of Pakistan. This is page? This is PLD 1998 Supreme Court 161. Okay, Asad Ali. The question was with reference to the entitlement of the senior most person to be the Chief Justice of Pakistan. And the question was there a convention? And if there was a convention, did it have some binding force? This was the question. The Supreme Court, I take your Lordship on page 314, paragraph 95. We are inclined to agree with the conclusion that a constitutional convention once established has the same binding effect as a constitutional provision. I don't want to read the rest of the paragraph. Your Lordship has already said. So, Never mind. now I have a question. Yes. Are you saying that the senior most judge of the High Court must be made, because there's a convention, the Chief Justice upon the don't interrupt till I finish the question. Upon retirement of the Chief Justice, have I understood you correctly? No, my Lord. Your Lordship is not. Then Your Lordship will have to read the judgment. That judgment says
that the senior most judge of the Supreme Court has to be appointed as Chief Justice because there's a convention and there's a past practice. And elaborate arguments have been given. And it is... Convention in the High Court generally is to make senior most Chief Justice. But So it becomes constitution. This judgment doesn't talk about the High Court. It talks about the Supreme Court. बात हो रही है ना, असूल की बात The senior most judge of the असूल वो है Supreme जो Court मेरे लिए जो जजमेंट has में to है, be आप appointed खुद as Chief Justice because there's a convention and there's a past practice. जी सर, And elaborate arguments have been given. And it is... Convention in the High Your Court Lordship generally is held to make senior that most these Chief rules Justice. of the Supreme So Court, it this becomes judgment is on a higher constitution. pedestal. This judgment doesn't talk then about the audit law. It talks about the Supreme Court. And कौन सा judgment है? My Lord, appointed as Chief Justice because there's a convention and there's a practice. And elaborate arguments have been given. because these And rules it is... Convention in the High Your Court Lordship generally have is to been make senior made most these Chief rules Justice. by the Supreme So Court. this This judgment becomes is on a higher constitution. pedestal. And this judgment doesn't talk then about the audit law. It talks about the Supreme And Court. citation of judgment 2010. Appointed as Chief Justice because there's a convention and there's a practice. And elaborate arguments have been given. Because these And rules it is... Convention in the High Your Court Lordship generally have been made these rules by the Supreme So Court. this This judgment becomes is on a higher constitution. pedestal. And this judgment doesn't talk then about the audit law. It talks about the Supreme Court. And citation of judgment 2010. power to make laws. Appointed as Chief Justice because there's a convention and there's a practice. And elaborate arguments have been given. Because these And rules it is... Convention in the High Your Court Lordship generally have been made these rules by the Supreme Court. This judgment is on a higher Judgment में आप क्या pedestal. बताना चाह रहे हैं? Judgment doesn't talk then about the audit law. It talks about the Supreme Court. And citation of judgment 2010. इस जजमेंट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस because this convention is a practice. And elaborate arguments have been given. Irrelevant because and it is Convention in the High your Court lordship generally have been made these rules by the Supreme goes Court. on This judgment is on a higher judgment में आप क्या बताना चाह रहे हैं? then the audit law goes on to clarify and Citation इस जजमेंट में कहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस and elaborate arguments have been Supreme Court rules because and it is your lordship have been made these rules by the Supreme Court. This judgment is on a higher judgment में आप क्या बताना चाह रहे हैं? then the audit law goes on to law and Supreme Court rules are on a higher the Supreme Court is chief justice and elaborate arguments have been Supreme Court rules because and it is इसमें नहीं, ये काम नहीं होता है वकील का। वकील का काम होता है निशानदेही करे फलां सफ़े पे इस पैराग्राफ में। ये नहीं कि मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हमें डराए नहीं, आप सिर्फ वजाहत कर दें। पढ़ना शुरू कर देता हूँ। पेज बता दीजिए प्लीज। सिर्फ पेज बता दें, हम पढ़ लेंगे खुद। वहाँ इस पे ये बात नहीं लिखी है जो आप कह रहे हैं इस पेज पे। 536 हाँ, ये मैंने पढ़ ली। चलें अगला बताइए केस। PLD 1997 Supreme Court 426. Check this case, my lord. PLD 1997 Supreme Court 426. जी सफ़ा 511, page 511, 511. जी 511 पे कहाँ कौन सा पैराग्राफ? Lord, paragraph 44, the second part of it. Significantly, by employing the word any law, the intention of the Constitution seems to be the Majlis-e-Shura Parliament, be it general or any law to amend the Constitution. Likewise, no amendment can be made
in respect of provision of the Constitution relating to judiciary by which its independence and separation from executive is undermined or compromised. These are built-in limitation in Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. I can agree with this proposition and still dismiss your petition. Nee, I'm just saying, so I don't know there is anything clincher here in your favor. It says these are built-in limitations in the Constitution completely independent from political morality and force of public opinion. इससे पहला बात है कि separation of executive is undermined. यहाँ तो parliamentary बात है ना, legislation. May look at PLD 1979 Supreme Court 49. एक सेकंड दूसरा बता रहे हैं PLD. PLD 1979 Supreme Court 1979 Supreme Court. PLD 1973 Supreme Court 49. Rahman's case. 73, 79. 73. My Lord, PLD 1973 Supreme Court 49. Relevant page. Relevant page is 68. 68. Then it is from 68 to 70, my Lord. To 70. ठीक. And इसी proposition पे. Please Lordship, Parliament, no law can be made compromising power of judiciary. ठीक. Paragraph page 70 पे मैं जरा पढ़ना चाहूँगा सर अगर इजाज़त दे. ठीक. Married? ये आपने कहा यही proposition. Yes, sir. तो हम पढ़ लेंगे आप पढ़ना चाहते पढ़ लें. पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए प्लीज. My Lord, page 70. जी. Exercising paragraph. In exercising the power, the judiciary claims no supremacy over other organs of the government, but acts only as the administrator of public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested with the power to declare declare what the law is in the cases which comes before it. It is thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is its duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. होती है. Yes. Enabling लेकिन कहाँ provision पे है? just with the court, it is an enabling provision. How it is applicable here? ठीक. My Lord, और कोई केस? it says, और केस? PLD 1998 Supreme Court 161 में sir, independence judiciary is a fundamental right. Page तो बता दे. Supreme Court. Page 161, 161. 98 Supreme Court. His Lordship. Relevant. Relevant is page 189, जी. page 247. यही बात है अलग. Independent judiciary is a fundamental right. Advocates to ensure independence of judiciary at page 190. Advocates have locus standi, page 191. Constitutional convention as good as constitution, any deviation amounts to deviation from the Constitution. 321, page 331. Certain questions have been asked and I wish to respond to them. अगर मैं आपके लिए आसान करूं, अगर हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें, आपके सवाल हम सुनेंगे वापस, ठीक है? तो वो उनकी तरफ से कुछ एंग्जाइटी थी कि शायद उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है कहीं, तो वक्त बचाने के लिए आप उनके भी बात को साथ साथ कवर कर लीजिएगा, सवालों को भी कवर कर लीजिएगा. अगर आप ये माकूल तरीक़ेकार समझते हैं, वो फिर चले जाएंगे. फिर आपकी एक जजमेंट पढ़ना चाह रहा था. नहीं वो आप पढ़ लीजिएगा. अगर अभी क्योंकि कहा हुआ है कि बेंचेस रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती. नहीं ठीक है, आपने कहा भाई
डिपेंडिंग ऑन भाई हो सकता है गलत का हो, गलतियां भी हमसे हो जाती हैं, वो बात अलग है। भाई दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमें एक्चुअल में कोई डिफरेंस है या फिर डिफरेंस एग्जैक्टली सिंबल ने इस्तेमाल किया है पहली बार टाइटेनियम का, टाइटेनियम एक्सट्रूडिंग, लेकिन इतना मैक्स के अंदर लगता है हर एक आपको फिर देंगे हियरिंग, ये नहीं समझें कि आपको लाइटनिंग पोर्ट 14 प्रो मैक्स के अंदर आपको ये लाइटनिंग पोर्ट देखने मिलता है, जिससे आप ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर आपको टाइप सी पोर्ट